Assalamualaikum everyone. So the topic is about the dysrhythmia. It is the continuation from the pre-operative care. So in the previous section or the part two of the pre-operative care, I have mentioned about how we operate or manage the cardiac patient pre-operatively, like if the patient is having myocardial infarction, so at least for 3 to 6 months, हमने उसकी surgery नहीं करनी. The surgery time is after 3 to 6 months. Now comes to the another topic, that is the dysarrhythmias. Dysarrhythmias are basically abnormal rhythm and the heart rate of heart. So mostly patients of dysarrhythmias are usually treated with the atrial fibrillation, and the drugs which are commonly given are beta blockers, digoxin or calcium channel blocker. So they should be started preoperatively or continue if the patient is already taking. So ये patient जो है who are taking beta blockers or digoxin or calcium channel blocker for controlling their heart rhythm कि हम continue करते हैं preoperatively. तो ऐसे patients जो कि at the time of surgery भी हम सिर्फ water के साथ बोलते हैं कि ये medicine आपने लेनी है, like hypertensive medicine की तरह. अब वाई वी आर गिविंग बिकॉज उसके कार्डिक आउटपुट को हमने कैन इंक्रीज अप टू 50%, क्योंकि साइनस रिदम स्टोर करता है, हार्ट रेट मेंटेन करता है, तो इसलिए हम ये मेडिसिन दे रहे होते हैं. नाउ अनदर वन इज द वारफरिन. वारफरिन जो होता है ये ऑब्वियसली हमने ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन वाले, ये इंक्रीज चांस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट, तो इन पेशेंट्स में हम जो है वो यूजली 5 days पहले ही वारफरिन स्टॉप कर देते हैं. और ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी से एक दिन पहले वी यूज टू डू एन INR टेस्ट, और द नॉर्मल वैल्यू ऑफ INR इज 1.5 और लेस, तो हम सर्जरी के लिए ये पेशेंट सेफ होते हैं. क्योंकि एंटीकोगुलेंट है तो देयर इज इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ ब्लीडिंग, तो ऐसे पेशेंट्स जिनका INR इससे ज़्यादा होगा 1.5 से, तो ये पेशेंट ज़्यादा ब्लीड करेंगे जब ब्लड आर मोर थिनर. ठीक है. इसके साथ साथ द न्यूअर एंटीकोगुलेंट भी हमारे पास आ चुकी हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती हैं, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को. इसमें डायबेटिट्रेन है, रिऑक्सीबैन है, एपेक्सीबैन है और एंडोक्सीबैन. ठीक है. फैक्टर 10 इनहिबिटर्स हैं बेसिकली. इसके साथ साथ डू नॉट हैव एंटागोनिस्ट, मस्ट बी स्टॉप प्री ऑपरेटिवली, तो इनमें कोई मसला नहीं है. ठीक है. जनरली ऐसे पेशेंट्स जो कि 2 से 3 दिन पहले जो है जिनका रेनल फंक्शंस नॉर्मल्स होते हैं, और जिनके हमारे पास इम्पेयर्ड रेनल फंक्शंस होते हैं, तो उसमें हम ऑल्टरनेटिवली प्री ऑपरेटिवली हम जो है वो, जिनमें स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उन पेशेंट्स में हम जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली अनफ्रैक्शनल लो मॉलिक्यूलर वेट हैपन इंड्यूस कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं. इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स जो कि मैकेनिकल वॉल्व जिनके अंदर लगे हुए हैं हार्ट वॉल्व में एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ, यानी कि उनमें मिट्रल या ट्राइकैप्सपेट इनकम्पिटेंसी है वॉल्व्स में, तो उसमें भी हम जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हैपन दे रहे होते हैं, सबक्यूटेनियसली दे रहे होते हैं. ठीक है. इसके साथ साथ वॉल्वुलर हार्ट डिजीज में अगर आते हैं, तो वाइल एनेस्थेटिक मैनेजमेंट इज ऑल्टर्ड to achieve hemodynamic stability in moderate valvular heart disease. The patient with severe aortic and mitral stenosis may benefit from valvuloplasty before elective non-cardiac surgery. ठीक है. सो एनेस्थेटिक मैनेजमेंट हमें अचीव करने के लिए, इनको हेमोडायनेमिकली स्टेबल करने के लिए, मॉडरेट जो वेलुलर हार्ट डिजीज है या पेशेंट जिनमें सीवियर हार्ट डिजीज है, इसमें जो है हमने एप्रोप्रिएट एनेस्थियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों का होना लाजमी है. ठीक है. इसके अलावा जो मैकेनिकल हार्ट डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनको पहले हम जो है वो वार्फरिन दे रहे होते हैं, और 5 days बिफोर हम वार्फरिन स्टॉप कर देते हैं. एंड इन्फ्यूजन ऑफ अनफ्रैक्शन हैपन भी हम स्टार्ट करते हैं when the INR falls below 1.5. The activated APTT, partial thromboplastin time, should be monitored to keep it at 1.5 times normal, and the infusion is then stopped 2 hours before the surgery. ठीक है. Heparin and warfarin should be started in the post-operative period, and heparin is stopped when the full effect of warfarin takes effect. ठीक है. तो ये कैसे चेक करेंगे हम INR और APTT चेक करके. Thrombin inhibitors and factor 10 inhibitors are not licensed and should not be used in patients with mechanical heart valves. Okay. Now comes to the anemia and blood transfusions. Obviously, HB अगर कम होगा, so we cannot proceed it. क्योंकि patient hypovolemic shock में जा सकता है. So patient should be anemic
found to be, if the patient is found to be anemic, at preoperative assessment should be investigate for the cause of their anemia. कॉज क्या है उसकी, हेमरॉइड से आ रहा है, अपर जीआई ब्लीड है, लोअर जीआई ब्लीड है, हेमरॉइड से आ रहा है ब्लड, उसको अल्सर से ब्लीड हो रहा है, या ब्लड बन नहीं पा रहा, कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डाइटरी इनसफिशिएंसी है पेशेंट की। सो ऐसे पेशेंट्स को हमने पहले प्रिपेयर करना होता है, तो देयर शुड बी ट्रीटेड विद आयरन, वाइटामिन सप्लीमेंट्स, ऑब्वियसली मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो आयरन देंगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलेट की डेफिशिएंसी को हम हाईलाइट करेंगे। इस पे एक सेपरेट लेक्चर बनने वाला है वैसे। So chronic anemia is well tolerated in the preoperative period. However, the patient has undergone a major procedure pre-operatively, transfusion may be considered. ठीक है। इफ एक्सेसिव ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड एंड प्री ऑपरेटिव ग्रुप सेंसिटिव शुड बी, तो हम क्या कर रहे होते हैं, अगर इफ देयर इज अ मेजर सर्जरी तो हम जो है वो होल ब्लड अरेंज करवा रहे होते हैं, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के लिए भेज रहे होते हैं। सो दे अल्टीमेटली ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग हो रही है, तो हम कंसर्न ले रहे होते हैं पेशेंट से बिफोर ऑपरेशन कि हम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज की जरूरत है। ठीक है। तो सब पेशेंट्स, कैसे पेशेंट्स कुछ रिफ्यूज भी करते हैं, जैसे पाकिस्तान में नहीं बट वी हैव अ जुविया विटनेस, ये मोस्टली क्रिश्चियनिटी का एक है, इसमें दे डोंट बिलीव इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इन पेशेंट्स के लिए फिर ये होता है कि वी हैव अ सेल स्लैवेज प्रोसेस और री इन्फ्यूजन फ्रॉम द ड्रेन्स, यानी कि जो इनका ब्लड लॉस हो रहा है उसी को दोबारा फिल्टर्ड करके इनमें हम दें। तो ये इस चीज को मान रहे होते हैं, किसी और का ब्लड नहीं ले रहे होते। सो ये हो गया। नाउ रेस्पिरेटरी डिजीज प्री ऑपरेटिवली मोस्टली GA के बाद हमारे पास पेशेंट में निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कि मेजर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी होती है। और मोस्टली किस वजह से, मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज और thoracic surgeries में the patients may have a greater chance of pneumonia. A patient's current respiratory status should be compared with their normal state, यानी कि pre-operative and post-operative से दोनों से हम मैनेज करेंगे। पेशेंट के एस्थमा की हिस्ट्री या सीवेरिटी ऑफ एस्थमा और COPD को हम जो है वो पास्ट हॉस्पिटल एडमिशंस और ट्रीटमेंट कंडीशन, ये सारी चीजें देखते होते हैं। इनके साथ साथ उनके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा रहे होते हैं। स्टेरॉइड्स के, ओरल स्टेरॉइड्स की यूज बढ़ा देते हैं, होम ऑक्सीजन, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर सपोर्ट्स। इसके अलावा राइट हार्ट फेलियर, ये भी हम सारा, जैसे COPD होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है और राइट हार्ट फेलियर, दीज और हमें इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट को देखना होता है। प्री ऑपरेटिवली मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में चेस्ट रेडियोग्राफी करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं चेस्ट का, लिम्फोसाइमेटिस बुलेस देखने के लिए, कैंसर्स, मेटास्टेसिस, इफ्यूजन्स, सारी चीज़ें। पेशेंट्स ऑन ओरल स्टेरॉइड ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी ऑन होम वी हैव forced expiratory volume जो होता है first second FE1 is less than 30% predicted value for age, weight and height, or PCO2 levels greater than PK 6 kPa have severe disease and risk of pneumonia. तो ऐसे patients को जो है वो there is a greater chance of pulmonary failure in the post-operative period. So patients should continue to use their regular inhalers until the start of anesthesia. Brutal asthmatic may also need to extra स्ट्रेसफुल कंडीशन में इनका और फिर डिस्पोज होता है तो हम उसको ओवर कवर स्टेरॉइड्स भी दे रहे होते हैं। Encourage the patient to be compliant with the medication, जो उसकी medications है उस पर compliant करें, balanced diet, smoking stoppage करनी है। Information should be provided to indicate pre-operative risk associated with smoking. Smoking stoppage करवानी है हमने, because smoking reduce the carbon monoxide level and offer the patient a better ability to clear sputum. Evidence suggested that preoperative inspiratory muscles training significantly improved respiratory muscles function in the early post-operative period, reducing the risk of pulmonary complication. Now, this is mostly dependent upon the general anesthesia. Now comes to the regional anesthesia, spinal anesthesia or epidural, that is the less invasive surgical options should be considered in severe cases. इनमें हम जो है वो ऐसे पेशेंट्स में जो कि हाई रिस्क पे होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज और those have advanced respiratory disorders like COPD and those have a right heart failure. So इनमें हम जो है वो रीजनल एनेस्थीसिया की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं, और as well as अगर नॉन इन्वेसिव सर्जरी है तो elective surgeries would be postponed until acute exhibitions are treated. याद रखिएगा इन पेशेंट्स के लिए if there is elective surgery तो हम उसको postpone कर सकते हैं because they may have a lethal effect अगर वो acute exhibition of COPD और asthma के साथ गुजर दें।
These patients should be referred to respiratory physician if is severe disease or significant deterioration, major surgeries planned in the patient with significant respiratory comorbidities, right heart failure, shortness of breath होगी, extreme fatigue होगा patient को, tricuspid regurgitation होगी. These all are the hepatomegaly, the size of your liver is enlarged, there is edema on your feet. These all are the symptoms of right heart failure. So rare conditions may the patient is young and has severe respiratory problem like acute exhibition of asthma. तो इसमें हम postpone करके उनको बोलते हैं कि first you will take respiratory first of all आप जो है सबसे पहले जो है वो अपने जो रेस्पिरेटरी फिजिशियन है उससे कंसल्ट करें, मेडिकेशन एडजस्ट करवाएं और फिर जो है आप ये सर्जरी हम डिसाइड करेंगे. So that's all for today. For the next session, I will be covering the gastrointestinal disease, charity disease. Okay, thank you.